तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरुजी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, फिर ये भी चिंतन नहीं होता कि 8 मास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसुओं से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अगर गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है? ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखें की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूं और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली रूपी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूं। अंखें की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की मैं चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूं। प्रिय को लिया रिंझाए, ऐसा करके मैं प्रिय को रिंझाना चाहती हूं, ऐसा चाहती हूं। क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखन दे हूं तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समापित कर दूंगा तुम्हें। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया हो। इस स्टेज में उस शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतर संबंध, उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेमिका नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है, आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और फिर माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्ट साली, वो गाड़ी देती नहीं है, ये बाप साला आरामी है, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, मौका आएगा तो कुछ। अब वो चिंतन साली आई नहीं, कर्नाटक प्लेस में कहा तो था नहीं कहा, फिर क्या, फिर अभी 5 मिनट और देख लेते हैं शायद आ गया, आई नहीं। उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती कुछ नहीं है, तो बाप साला आरामी है, और आई नहीं, फिर 2 घंटे 2-2.5 घंटे की जाएगी, क्या हो गया, उसके घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते हैं, फिर भी जाएगा वो बेचारा, और दूसरे से रोका देखेगा, फिर दिखाई नहीं देगी, फिर रात बोतल फेंका। अब टेलीफोन है नहीं, टेलीफोन करे तो कैसे करे, क्योंकि माँ उठाती सीधा टेलीफोन, ये भी एडिक्ट कर, ये बुढ़िया मरे ना साला टेलीफोन से। और सारी रात वो घुमर चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी का संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए, खा नहीं खा, ठीक है, मुड़कर खा लेना, जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तो तुम्हारे सामने इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जो तुमने शादी की नहीं, और बात तुम्हारा वो सारा जोश खत्म कर, न तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढने शुरू कर देंगे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसका क्या। अब उसके बाद वो कि तुम लेट आते हो, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, वो ठेका है तुम्हारे पास, 5 बजे जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, वो उनके मैं रात खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया होगा, तो मेरे ठीक है, डॉक्टर पास चली गया, गोली लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। Shishya does not mean that you come and ram into me and then say that I had asked you to come closer. Believe me, for coming closer, it's not necessary for you to break my bones. Coming close means becoming one with my soul, forming a bond with my soul and with my heart.
When the disciple reaches the third stage, he comes closer to the Guru. Coming closer means that even his thoughts are not his own. In this state, there remains no questions in his mind. Then he does not even think whether the Guru is an ordinary man of flesh and blood or he is a god. He only thinks that he is his Guru and his Guru is everything for him. When his thinking transforms in this manner and when he touches the feet of the Guru, he realizes divinity in those holy feet. When this happens, his eyes fill up with tears of joy, and thus the disciple learns how to devote himself fully. When he becomes fully devoted, he obtains everything from the Guru. In this relation of Guru and disciple, there is no give and take. Establishing yourself in the soul of the Guru means getting closer to him so that your soul and his soul fuse to become one, and even your physical form becomes one with that of the Guru. All the time, only one thought should remain in your mind, and that is how to make the Guru happy, because then the body of the Guru becomes your own, and if a thorn pricks the feet of your Guru, you feel the pain, you feel restless. You shall not be in distress, but shall still experience restlessness. Then you shall know that something is wrong. This shall happen only when your soul fuses with mine and becomes one with it. They shall become one when you become a disciple, when you devote yourself. Akiyan ki karkotari putli palang bichai, palkan ki chik darke piyu ko liya rinjai. These lines were spoken by Meera, and she says, Akiyan ki karkotari, that is, I want to make a room of my eyes. Putli palang bichai, I want to make a bed of the pupils in my eyes. Palkan ki chik darke, with the image of my beloved in my eyes, I shall close the curtain of my eyelids. Piyu ko liya rinjai, and thus I shall win over my beloved. She further says, Na mai dekhu aur ko, that is, then I shall look at no other man. Na tohe dekan dehu, and neither shall I let you see anyone else when I shall have confined you within my eyes. This is the state of complete devotion, and on reaching this stage, Kabir says, Main tumhari bahuriya hoon. That is, I am your beloved. And this is why the Shishyopanishad says that Guru and disciple are like two lovers, because the most close relation in this world is between two lovers, and such closeness is not seen even in the relation between a parent and a child or between a brother and a sister. This is because in this relation there is always something new and fresh. There is a deep longing to meet again and again. Both remain restless to be together. If the girl fails to turn up one day, the boy feels uneasy and worries lest she is unwell. Or maybe he thinks her parents have stopped her from coming to him and he starts abusing them. He remembers that she had promised to meet him in Connaught Place. He looks at his wristwatch and realizes that there are still 5 minutes left. Perhaps she will come, he thinks. 2 hours pass and he still keeps waiting. It cannot be her fault, he says to himself. It is her father who is so mean. He decides to go to her house. What if her father sees me, he thinks. Still gathering some courage, he reaches her place and keeps standing some distance from her house in the hope that she would appear in the window or the terrace. She won't appear, and all night he shall remain perturbed. He cannot even ring her up because each time he gives a call, her mother picks up the phone. Why doesn't this old woman die? He says to himself. The whole night is spent waking
without a moment's mental peace, because this is the relation of two lovers and not a husband and wife. If you say to your wife that you don't wish to have food, instead of asking you if you are well or not, she won't even care and shall say, "Fine then, you can eat tomorrow." As lovers, you may have loved her deeply, and your sweet affair may have lasted 2 years, but as soon as you got married, all the enthusiasm and love seemed to have vanished forever. You won't even feel like talking to her and shall start looking for another girlfriend. You shall think that now she is your wife, thus she shall remain forever, so there is nothing to worry about her. She shall ask you why you came late from office. You shall reply that you work in an office and that you are not her servant to arrive exactly at 5 o'clock. This is the same girl you loved so dearly. She will say that she has not had food since the previous evening, and you shall not care at all. You shall ask her to better go to the doctor, and then you shall not give another thought to her illness. This is because the mutual attraction has vanished. No such love exists between a husband and a wife. This is why it's always said that the deepest love is between two lovers. The same close bond must exist between a guru and a disciple, between a devotee and God. If one of the two has promised to meet at 3 o'clock and does not turn up, then the other should feel uneasy, worried and impatient.